हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषिकेश एंड वेलकम बैक टू FrazzleEnglish101.com, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश इन द टेलीग्राम कम्युनिटी थ्रू हिंदी। द एलिफेंट रोप। A man was walking nearby to a group of elephants that was halted by a small rope tied to their front leg. He was amazed by the fact that the huge elephants are not even making an attempt to break the rope and set themselves free. He saw an elephant trainer standing beside them and he expressed his puzzled state of mind. The trainer said, "When they are very young and much smaller, we use the same size rope to tie them, and at the age, it's enough to hold them. As they grow up, they are conditioned to believe they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never strive to break free." Now the moral of the story. It is the false belief of the elephants that denied their freedom for lifetime. Likewise, many people are not trying to work towards success in their life just because they failed once before. So keep on trying and don't get tied up with some false beliefs of failure. Wanna be fearless in just 30 days? Accept the challenge in the description down below. Let's see what we have learned so far. Belief, विश्वास करना. Likewise, इसी तरह. Denied, अस्वीकृत. Strive, प्रयास करना. Condition, स्थिति. Tie, बांध कर रखना. Beside, पास. Amazed, हैरान होना. Halted, रोकना. क्या आपको भी इसी तरह हमारे 3 फंडामेंटल्स लाइक प्रोनाउंसिएशन एंड एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर एंड लिसनिंग एक्टिविटीज के साथ इंग्लिश बोलना शुरू करना है, वो भी सिर्फ 30 दिनों में? तो इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल चैलेंज को एक्सेप्ट करें एट द प्राइस ऑफ जस्ट 1 मंथ्स नेटफ्लिक्स प्लान। सिर्फ 499 रुपीज में आप 1 साल तक इंग्लिश को प्रैक्टिस कर पाएंगे, इंक्लूडिंग 30 डेज चैलेंज, इवन विद द मंथली लाइव क्लासेस जिसमें आप आपके डाउट्स क्लियर कर पाएंगे हमारे साथ, ताकि आप जो कुछ भी सीख पाएंगे या फिर जो कुछ भी आप सीखेंगे उसे आप अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा वही सीखेंगे जो आपको पता है, लेकिन जो आपका रिलेशन है स्पोकन इंग्लिश के शायद वो कंप्लीटली ही चेंज हो जाए। अगर आपको भी इंग्लिश सीखना है, वो भी सिर्फ 30 दिनों में विदाउट इवन लर्निंग इट, तो सब्सक्राइब करना ना भूले।